Very nice. Ganesh, can I start? Most respected guest speaker, Madam Dr. Karen Danielchuk, Dr. Rosa, Dr. Beatrice, Dr. Claudia, Dr. Darling Kluka, Dr. G. Kishore, all my dear PE teachers, a warm welcome to one and all to the PE and Community Coaching Batch 5 session. Today, very fortunate to have the president of WASM, World Association of Sport Management, with us as a speaker. Madam Karen Danielchuk is a professor in sport management in the School of Kinesiology and associate dean of the Faculty of Health Sciences at the University of Western Ontario in London, Canada. Throughout her career at Western, Madam has served as coordinator of the Intercollege Athletics and undergraduate chair of Kinesiology. Prior to working at the Western, Ma'am taught and coached the Hong Kong International School. Her research interests include sport participation, women's representation in sport, leadership, and sport marketing. Ma'am has been a leader in global sport management, professional organizer, serving as former president, treasurer, and chair of the International Relations Committee of the North American Society for Sport Management, NASM. She's also the founder and the current president of WASM, World Association of Sport Management, and also a founder honorary member of the Asian Association for Sport Management. Ma'am has been awarded with the Earl F. Ziegler Lecture Award, NASM's highest scholarly honor, and Gath Patton Distinguished Service Award, and is a NASM Research Fellow. Ma'am was the Assistant Chief Administration of Team Canada for the World University Games, Universiade in Sicily in 1997, Assistant Coach of the Canadian Women's Golf Team at the World University Golf Championship, FISU in South Africa in 2008, and has attended the FISU Games in Beijing in 2001, Bangkok 2007, in presentation capacities. She's been a competitive athlete and has coached tennis, squash, and golf at the university level. She holds degrees from McMaster University, that is Bachelor of Physical Education, the University of Western Ontario Masters, and University of Toronto. Throughout her career at Western, Ma'am also served as the coordinator of intercollege athletics and undergraduate chair of kinesiology. Prior to working at Western, she taught and coached the Hong Kong International School. And Madam is also specialized, has published extensively in a variety of international journals and has presented research globally. She has delivered keynote at numerous scientific conferences, including Taiwan, Japan, Thailand, South Korea, China, Malaysia, Colombia, Spain, Ireland, Argentina, Macau. Has been leader in the global sport management professional organizations. And indeed, ma'am, we are so fortunate and blessed to have such an eminent speaker and the president of WASM, not only of WASM, founder member of WASM, and also of ASM, of the Asian Sport Management. So indeed, being a woman and taking up this administration, which we always crave for, I think we are blessed to find such a great role model amongst us. On behalf of the Minister of Youth Affairs and Sports, Government of India, Khelo India, a warm welcome to our most dignified speaker, Madam Karen Danielchuk from Canada. A warm welcome to you, ma'am. I also welcome Professor Rosa Lopez de Amico, who's the president of APASCOE. Warm welcome to you. Dr. Claudia from Mexico, Dr. Beatrice from Brazil, and the Vice President of XP, Madam Darling Kluka. A warm welcome to each one of you as a panelist. I also welcome Dr. G. Kishore, who is the Principal and the Regional Director of Sports Authority of India, Lakshmi National College of Physical Education, and also all my dear PE teachers and coaches, because I always believe it's because of you that all of these speakers have come in. So warm welcome to all our ambassadors, I could say, the PE teachers and coaches. You're going to have a wonderful session today, and ma'am is going to give us insight, because a very important aspect when we talk of sport management, which we all talk of it, but truly to understand what it becomes really difficult. But to know more from Canada, may I request Madam Karen for the session, please. Well, thank you, Dr. Usha, for that kind introduction, and I'm delighted to be here. I have participated in this program in the past, and I just think it's a fabulous opportunity for physical education teachers and coaches in India. And I do like to extend my thanks to Dr. Kishore and Dr. Nair for their kind invitation to be involved
and also to Kalo India, Physical Education and Community Coaching. As you might be aware, it's the Ministry of Youth Affairs and Sport who has kindly supported this program for the Sports Authority of India to put the program on through the Lakshma Bai National College of Physical Education. So thank you to all of you. And I do want to extend a good evening, a good afternoon, and for some of us, a good morning as well. We're in different parts of the world, and it's just fabulous how the technology can bring us all together. What I'm going to talk about in the next little while will be sport in Canada, the structure of it. I will share with you the Canadian Physical Activity Guidelines, talk about some of the programs in operation, and a little bit about the impact of the current pandemic on sport in Canada, and I'll end my presentation just with a few words about the World Association for Sport Management. Dr. Karen, I think you need to put it on the slideshow, because there's this one slide which is on, and could you just make it on the slideshow, please? Okay, just hold on here. Is that any better? Good. Okay. Could you just say that the agenda you have mentioned? Can you just speak that a bit? Translate it. With the agenda, yes. I just did that. I'm just going to talk a little bit about the location of my university. You can see the map of Canada, and you'll notice that we are bordered in the south by the United States. You'll also see just to the right of the middle of Canada a red X, and that's the location of where I currently live and work at the University of Western Ontario. It was rebranded as Western University in 2012. So you'll notice that many of the states in the United States are actually north of where I live in London, Canada. Could you please, can you just show the previous, could you just translate that to them? The previous map? मैडम अभी बता रही थी कि मैडम कनाडा का मैप में देख रहे हैं आप, ये कनाडा ऊपर लिखा हुआ है, और मैडम जो रेड जो एक्स दिख रहा है, क्रॉस दिख रहा है, वहां पर मैडम रहती है, ये यूएसए के बहुत पास है, उससे बॉर्डर बनता है। और ये मैडम का जो यूनिवर्सिटी है वेस्टर्न ऑन्टारियो यूनिवर्सिटी, अभी 2012 से तो वेस्टर्न यूनिवर्सिटी हो गया है। मैडम यहाँ पर प्रोफेसर है, तो मैं मैडम मैप में दिखाना चाहती है कि कहाँ पर है, किस जगह है, लंदन बोल की जगह पर है इन कनाडा। थैंक्स मैम। The university where I teach is a large one. It has 40,000 students from more than 120 countries, and we have many students from India. And in fact, we are trying to attract more and more international students, specifically from India. ये मैडम का यूनिवर्सिटी है, यहाँ पर 40,000 से ज्यादा बच्चे पढ़ते हैं और 11 से ज्यादा फैकल्टीज माने डिपार्टमेंट है, और बहुत सारे बच्चे इंडिया से भी हैं। मैडम ये भी बोल रहे हैं कि हम लोग काफी इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को हम उनको प्रोत्साहन दे रहे हैं, और देख भी रहे हैं कि ज्यादा से ज्यादा बच्चे आके बाहर के राज्य से बच्चे आके वहां पढ़े। यस मैम। The faculty in which I'm involved is called Health Sciences, and we have 6 schools and 4,500 students. My home school, where I teach and have graduate students, is kinesiology, but we also have health studies, nursing, physical therapy, occupational therapy, audiology, and speech language pathology.
मैडम के यहाँ जो स्कूल है, इनके यहाँ आप देख रहे हैं कि ये 6 स्कूल्स है। स्कूल्स माने एक एक जो डिपार्टमेंट हेड बोलते हैं, तो इनका जो एक जहाँ है वो 4,500 बच्चे भी हैं। और मैडम किन्सियोलॉजी के डिपार्टमेंट में काम करती है। इसके अलावा वहाँ पे जो हेल्थ स्टडीज है, नर्सिंग भी उसी में आ रहा है, फिजिकल थेरेपी, ऑक्यूपेशनल थेरेपी, ये सारा इसी स्कूल के अंदर आ रहा है। मैडम जहाँ उसी सेक्शन में वहाँ काम करती है, लेकिन मैडम किन्सियोलॉजी डिपार्टमेंट में वो काम करती है। Two of these centers that I wanted to mention pertain to sport, physical activity and exercise. And within our faculty, we have a national center that is unique in our country called the Canadian Center for Activity and Aging. And it promotes physical activity and well-being of older adults through offering the opportunity for these individuals to be tested on site and to participate in exercise programs that are delivered by other older adults as well as our university students. इनके यूनिवर्सिटी में, मैडम की जो यूनिवर्सिटी में एक सेंटर है, जो सेंटर हम जो उम्र वाले हैं, काफी एज हो गए उनके लिए, उनके और एक्सरसाइज का, एजिंग बोलते हैं, एजिंग और एक्सरसाइज एक्टिविटी का इन्होंने सेंटर खोला। लेकिन वो अभी एक नेशनल सेंटर बन गया और पूरे दुनिया में ये बहुत फेमस सेंटर है। उसको बोलते हैं कैनेडियन सेंटर ऑफ एजिंग एंड फिजिकल एक्टिविटी। ये यहाँ पर जो भी है, क्योंकि वहाँ पे उम्र के हिसाब से हम देखते हैं 100 साल तक लोग हैं जो एक्सरसाइज के लिए आते हैं। कोई भी बीमारी है, उनके लिए अलग अलग तरीके की एक्सरसाइज है। उनके स्टूडेंट, यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स भी उनको मदद करते हैं। साथ ही साथ जो उम्र वाले लोग हैं वो भी वहाँ ट्रेन करके कैसे दूसरों को एक्सरसाइज दिया जाता है, एक्सरसाइज प्रिस्क्रिप्शन माने एक एक बीमारी का किस तरह से एक्सरसाइज कराया जाता है, और इसके अलावा इनको टेस्ट भी किया जाता है। तो बहुत अच्छी लैब भी है, साथ ही साथ एक्सरसाइज प्रिस्क्रिप्शन है। तो ये बहुत फेमस कैनेडियन सेंटर फॉर एक्टिविटी एंड एजिंग, आप गूगल सर्च करके देखिएगा। ये पूरे दुनिया में काफी बहुत नाम कमाया है इस कैनेडियन सेंटर में। Yes, please. The second important center is the International Center for Olympic Studies. And this was formed in 1989 at our university. And it is a research resource center that develops scholarship and research related to the Olympic Games, the Paralympic Games, and the Olympic movement itself. It's the second largest center in the world outside of the main one in Lausanne, Switzerland. And this center hosts a conference every 2 years. It publishes a journal and delivers a lecture series. But within the center, there are all sorts of resources, written resources, as well as some of the souvenirs of the various Olympic Games over time. अभी एक दूसरी खासियत यूनिवर्सिटी वेस्टर्न यूनिवर्सिटी की है कि वहाँ पे एक ये सेंटर, इंटरनेशनल सेंटर फॉर ओलंपिक स्टडीज, आप सब जानते हैं ओलंपिक गेम्स की जो शुरुआत है ओलंपिक्स के बारे में। सबसे पहले तो स्विट्जरलैंड में जो सबसे बड़ा सेंटर है, लेकिन दूसरी सेंटर जो है जो सबसे बड़ा सेंटर है वो वेस्टर्न यूनिवर्सिटी में है। और वहां आप देखेंगे कि यहाँ पे उन लोगों को काफी रिसर्च करना, और जो भी ओलंपिक हो, पैरालंपिक हो या ओलंपिक मूवमेंट के बारे में पूरी जानकारी, इनका बहुत अच्छा लाइब्रेरी है। पूरा जो सेटअप ही, कुछ भी जानकारी आप ओलंपिक से बेसिस करेंगे तो ये इनका जो लाइब्रेरी में मिलता है। और यहाँ ये लोग रिसर्च करते हैं, स्कॉलरशिप देते हैं। इसके अलावा इनकी जर्नल निकलती है, इसको ओलंपिक का जर्नल निकलती है। और ये एक बहुत अच्छा रिसोर्स सेंटर है और इतने सारे काम होते हैं, क्योंकि हम देखते हैं जो पास्ट हिस्ट्री है, जो बीता गया है, आगे कैसा है, और हर राज्य की जो एक मेडल्स होती है या उसकी जो ओलंपिक बेस्ड खासियत होती है, वो सारी इधर आपको इस पर्टिकुलर सेंटर मिलेगा। तो जो भी ओलंपिक्स में रिसर्च करते हैं वो जरूर ये सेंटर विजिट करते हैं, जिससे उनको ज्यादा जानकारी मिले। यस मैम। So I'm just showing you some images of Canada here. In the middle, you'll see the geography, the Canadian Rocky Mountains in Western Canada, Niagara Falls. Of course, it has both
the falls on the Canadian and the American side. We have a national police force called the Royal Canadian Mounted Police. You'll see the mascots of the Olympic and Paralympic Games that Vancouver and Whistler, Canada hosted in 2010. The beaver is the emblem of our country. And of course, at this time of year, coming up in another month, our maple trees deliver to us maple syrup. So just some of the images. अभी कनाडा के बारे में मैंने कुछ फोटोग्राफ्स दिखाए। आप ये कैनेडियन का जो रॉकी माउंटेन्स है इनका जो आप दिखा रहे हैं कि काफी है। आप और आप इधर नायग्रा फॉल्स के बारे में सुना, आप गूगल देखेंगे। नायग्रा फॉल्स की एक खासियत थी कि उनका बॉर्डर यूएसए में भी आता है, कैनेडियन में। कैनेडियन के साइड पे से आप जाते हैं तो कैनेडियन साइड दिखता है और वो यूएस से भी दिखता है। और दूसरा है उनकी जो पुलिस माउंटेड हॉर्स, ये कैनेडियन का स्पेशलिटी है। और वहाँ जो इनके पैरालंपिक्स ओलंपिक्स इनका जो है बास्केट है। और ये मेपल उनका वहाँ जो पेड़ है उसको मेपल ट्री बोलते हैं और इस पेड़ से उसका सिरप निकलता है, उसको बोलते हैं मेपल सिरप। वो एक सीजन में आएगा तो सारे, तो इसकी जो इनका जो एक नेशनल ये पत्ता है काफी इनका सिंबॉलिक है। इसको बोलते हैं मेपल लीफ, मेपल ट्री का पत्ता है, इसलिए इसको बोलते हैं मेपल लीफ। तो मैडम एक अपना एक ग्लिम्स दिखाना चाह रही थी कि कनाडा की क्या क्या खासियत है। स्पेशली वहां देखते हैं नदी है, फ्रेश वाटर लेक्स हैं, बहुत सारा ऐसा इतना ताजा कहीं हमें दिखता नहीं है। और वहाँ हम यूनिवर्सिटी भी बहुत बड़ी है, स्पेशली कनाडा यूनिवर्सिटी, वेस्टर्न यूनिवर्सिटी जो लंदन में है। यस मैम। And these are just images of our country and the sport and physical activity. We have 4 seasons throughout the year, so all sorts of opportunities to participate. कनाडा में आप देखेंगे कि इनका 4 सीजन है, तो इसमें अलग अलग एक्टिविटी, स्पोर्ट्स, फिजिकल एक्टिविटी आप देखते हैं। रॉक क्लाइंबिंग या माउंटेनियरिंग या स्कीइंग है, क्योंकि स्नो कई जगह 6 महीना पूरा स्नो में रहता है, तो उसके मुताबिक एक्टिविटी में बहुत ज्यादा ये लोग बहुत ज्यादा भाग लेते हैं। यस मैम। And our country itself is surrounded by water, 3 oceans. Most of the population lives in cities. And we do have 10 provinces and 3 territories. Our official language is English, but our second language is French. And almost a quarter of our population was born outside the country. अभी इन्होंने फैक्ट्स दिया, मैम ने दिया कि दूसरी लार्जेस्ट जो कंट्री है जमीन लैंड के तौर पे देखा जाए तो दूसरी लार्जेस्ट कंट्री है। इनके चारों तरफ 3 समुंदर है। और इसके अलावा आप इनकी पॉपुलेशन देखेंगे कि 38th लार्जेस्ट है। और इसमें 10 प्रोविंस है। 70% लोग 15 और 65 साल के बीच में है। और इनकी डेंसिटी पॉपुलेशन में हमारे लोग बहुत कम है। एक्चुअली आप वहां जाओगे तो आपको लोग दिखेंगे नहीं। जब आप भारत को देखते हैं, भारत में डेंसिटी बहुत ज्यादा है, वहां आपको लोग कहीं दिखेंगे नहीं पास। ज्यादातर लोग सिटी में, शहर में ही रहते हैं। और लिटरेसी रेट भी बहुत अच्छी है क्योंकि सब पढ़े लिखे हैं। और इसके अलावा काफी लोग इसमें बाहर ही इनका जन्म हुआ है, वो बाहर से आके वहां सेटल हुए हैं। और जैसे मैंने बताया इनका कैपिटल ओटावा है और इनका जो एम्बलम है वो मेपल लीफ है। मैंने आपको पहले बताया था, पिक्चर दिखाया था। यस मैम। And you can see a map here of the world. And I just wanted, for point of reference, India and Canada are both surrounded by water. So there's lots of coastline. And this is important because this influences sport. But your population is much larger than ours. We only have about 38 million people, even though geographically it's the second largest country in the world. आप देखेंगे काफी भारत और कनाडा काफी एक जैसा समान दिखता है। आप उसका देखिए, लेकिन इसमें देखा कि उनका जो जमीन का है वो सब काफी है, लेकिन हमारी जो जनसंख्या बहुत ज्यादा है। उनमें सिर्फ 37 मिलियन करके आ रहे हैं, लेकिन आप हमारा देखेंगे हम लोग का जो जनसंख्या ज्यादा है, इसीलिए काफी फर्क पड़ रहा है जब हम देखते हैं भारत और कनाडा के बीच। क्योंकि आप कनाडा में जब कहीं जाएंगे भी, कई जगह आपको बहुत कम लोग दिखेंगे।
So there are many factors that impact sport, exercise, recreation, such as what is happening around the world now. The pandemic has had a huge influence on sport. In our country, we can still participate in activities outdoors, but currently many of our indoor sport facilities are closed. And that is just one example, but there are factors such as economic, other social ones, cultural, technological, environmental ones that have to do with how much physical space there is, and if people live in cities to provide physical activity space. And of course, sometimes there are political issues and wars going on that also impact or influence sport. कौन जो किस पे असर जो खेल है, खेल और लेशर माने जो हम खाली टाइम इनके लेशर एक्टिविटी बहुत ज्यादा, लेशर माने जो हम जब हमारा समय फ्री रहता है उस समय हम किसी एक्टिविटी में भाग लेंगे, उसको बोलते हैं लेशर टाइम, क्योंकि किसी को सही तरह से वहां हमने देखा काफी कॉमन है। लेकिन ये सब उनकी जो आर्थिक स्थिति, सामाजिक, उनकी जो कल्चरल है, जो रीति रिवाज है, टेक्नोलॉजी, और उनका जो हम देखते हैं एनवायरमेंट माने हम देखते हैं काफी पोल्यूशन फ्री जगह है, और साथ में पॉलिटिकल, ये सारे मिलके ये तय करेगा कि किस तरह का क्या खेल कहाँ तक जा सकते। अभी कोविड में देखा गया काफी जगह कंट्रोल है, कई जगह खुला नहीं अभी तक, लेकिन इससे सारी खेल पे असर पड़ा है। This is an example of how sport has been adapted. This is a dragon boat race in the capital city of Canada, in Ottawa. And during the winter, it's very cold, and the river that runs through it freezes over and people can skate on it. But a few years ago, during the winter festival, they put dragon boats on the ice, and they, instead of using paddles, they used brooms from the sport of curling to move the boat along in races. अब अभी ये दिख रहे हैं, ये जो पिक्चर आपको दिख रहा है, ये आइस ड्रैगन बोट रेसिंग है। ये नदी है। एक्चुअली नदी क्या होता है, जब सर्दी होती है तो वहां वो नदी पूरी जम जाती है, तो ये बर्फ है, पूरा नदी है, नदी है। नदी के ऊपर इन लोगों ने क्या किया, ये बोट का जो है ड्रैगन बोट रेस कराते हैं इसमें। तो इसमें ये लोग पैडल नहीं होते, क्योंकि पैडल हमें पानी से ले जा सकते, लेकिन ये कर्लिंग करके एक खेल होता है जिसमें हम इस जो साइड में आप देख रहे हैं, मेरे को सही पता नहीं है, जो यूज करते हैं, तो उससे वो उसको आगे हिला पाते हैं। तो इस तरह का रेस अब से शुरू हुआ है, जो कि आप देख रहे हैं यहाँ सारा ये है, ये नदी है, नदी जम गई है, इसके ऊपर ये लोग ड्रैगन बोट रेस इन्होंने शुरू किया एक कंपटीशन के तौर पे। So this is a question for you that most people can answer. Canada's official national winter sport. Most people think of Canada as having winter sports, and of course it's ice hockey. And for our official national summer sport, it is not as easy a question for you to answer, because it's related to our indigenous roots, and it's actually lacrosse. Lacrosse. Okay. Could you just explain a bit with that, because we are not familiar with the particular lacrosse? Okay, sure. आप ये देख रहे हैं इनका जो समर, इनका जो नेशनल स्पोर्ट बोलते हैं, समर का स्पोर्ट है, लैक्रोस है। मैडम उसके बारे में समझाएगी क्या है, मैंने पूछा है। आप देख रहे हैं इनके हाथ में है, ये कैसा खेला जाता है। Could you just give us a brief idea of how this game is being played? Yes, lacrosse is used, one uses a stick, and there is a ball, and you propel the ball with the stick. So it's almost like a racket or a field hockey stick, but you pitch it in the air. And this sport can be played outdoors or also indoors. Okay. अभी आप देख रहे हैं रैकेट टाइप का है हाथ में, तो वो बॉल को हवा में मार के, but I think only once we see the video can get a better picture idea about it, how it is. Right. And we'll see it later. We'll check for that.
Sure. अब बाद में हम आपको देखेंगे. Yes. The fastest growing sport in Canada is actually cricket. So this is of interest. We have a lot of people who move and immigrate to Canada, and many of those people in their home countries are familiar with participating and spectating the sport of cricket. आजकल जो देखा गया जो खेल ज्यादा आ रहा है वो क्रिकेट बहुत ज्यादा पॉपुलर हो रही है कनाडा में. बाहर से जो भी लोग आ रहे हैं इसकी वजह से कनाडा में सबसे ज्यादा जल्दी जो गेम बढ़ रहा है वो है क्रिकेट. These are some of our popular participation sports in Canada. As you can see, ice hockey is one of the most popular. During this COVID time period, though, the most popular ones in the spring and summer months were golf and tennis, because they were able to be played safely during the pandemic. And then the team sports have been put on hold because of the gatherings and the lack of ability to physically distance. ये जो कौन सा खेल को ज्यादातर बहुत ज्यादा पॉपुलर है कनाडा में, आप देखेंगे आइस हॉकी है, लैक्रोस है, सॉकर माने फुटबॉल है, बेसबॉल है, क्रिकेट, टेनिस, रग्बी, बास्केटबॉल, कर्लिंग, गोल्फ है. लेकिन अभी ये जब कोविड की वजह से इन्होंने देखा कि टीम गेम सब में मनाई थी, लेकिन जो गेम ज्यादा खेला गया वो था गोल्फ और टेनिस, क्योंकि उसमें ज्यादा लोगों की भीड़ की जरूरत नहीं, अकेले खेले जाते हैं, इसलिए टेनिस और गोल्फ उसका प्रैक्टिस चल रहा था. अभी भी वो खुल के एंड लोग उसको प्रैक्टिस कर रहे थे. And these are the sports in which I participate. As I said, we have 4 seasons, and so during the spring and summer and even the fall, I'm on my bicycle and I'm playing golf and tennis and swimming, doing a lot of walking during the winter. And right now we have a lot of snow. So I cross-country ski, which I did yesterday and will do later today. And do you have any video of yours to share with us when you're doing this? We would love to see that. May not be now. You could send us a link. मैडम ने कितना, अभी आप देखेंगे मैडम ने दिखाया जो मैडम अपना वक्त कैसे खेल में बिताती है. मैडम साइकिलिंग करती है, गोल्फ खेलती है, टेनिस खेलती है, स्विमिंग खेलती है और आजकल वॉकिंग करती है. मैडम का रोज का रहता है. और अभी विंटर में स्कीइंग किया मैडम ने, कल भी स्कीइंग किया क्योंकि वहां पे बर्फ बहुत ज्यादा है. तो मैडम बहुत एक्टिव रहती है. तो इनका जो माहौल है वो बहुत अच्छा है. उसे मैं कहता है ये हम लोग के लिए काफी अच्छा हमको मोटिवेट करता है जब हम ये देख लेते हैं. यस मैम. And I just want to spend a couple of minutes talking about the organization of sport in Canada. And it falls under the federal or national Department of Canadian Heritage. And a body called Sport Canada governs sport, but it's the government that gives money to Sport Canada to operate 3 programs: hosting of national championships and sending our athletes to international competitions, having national sport organizations, and also helping our elite athletes with the costs of their training. खेल कैसे मैनेज होता है वहां बोला कि वो फेडरल डिपार्टमेंट के अंडर है, जो कैनेडियन हेरिटेज का, मुझे एग्जैक्टली हिंदी नहीं आ रहा, लेकिन इसमें स्पोर्ट कनाडा करके इनका एक ऑर्गेनाइजेशन है, वही स्पोर्ट का देती है. लेकिन कैनेडियन गवर्नमेंट स्पोर्ट कनाडा को जितनी हम उनको आर्थिक जो सहायता देती है किस तरह से, और ये लोग अपना पैसा आर्थिक सहायता जहां उनको होस्ट करना है, बड़ी बड़ी इवेंट्स होस्ट करनी हो, एथलीट्स की तैयारी करनी हो, जो भी सहायता एथलीट्स को अच्छे जगह पहुंचने के लिए, ये सब में स्पोर्ट कनाडा कैनेडियन गवर्नमेंट जो है, उनका जो गवर्नमेंट है वो स्पोर्ट कनाडा को देती है. इसमें So we have many national sport organizations like many countries around the world. And this is one example of an organization called U Sports, which is the governing body for inter-university sport or intercollegiate sport in our country. So our students who are very skilled
will be selected to participate on an intercollegiate team, and the universities compete against each other, and they compete within a conference that is based geographically throughout the country, and then they might advance to a national championship. अभी बताया कि जो इनका नेशनल स्पोर्ट्स फेडरेशन है, इनका 55 फेडरेशन है, और इसके अलावा इनका यू स्पोर्ट्स होता है, जहाँ इनकी जैसे हमारी होती है इंटर कॉलेजिएट कॉम्पिटिशन्स होती है इनका। लेकिन कनाडा में देखा गया कि जो एक इंटर कॉलेजिएट हमारे जैसे नेशनल लेवल के उतने बड़े लेवल पे लोग ऑर्गेनाइज करते हैं, लेकिन इसके साथ ही साथ 50 से ऊपर यूनिवर्सिटीज है, और जैसे हम लोग बोलते हैं साउथ जोन, साउथ ईस्ट नॉर्थ वेस्ट हमारी जैसे जोनल होती है, ये इनको रीजनल कॉन्फ्रेंस वो सब मिलके उनका कॉम्पिटिशन चलता है, उसमें से जो अच्छे खिलाड़ी हैं उनको सेलेक्ट किया जाता है, बाद में ये लोग वर्ल्ड यूनिवर्सिटीज के लिए भी सेलेक्ट होके जाते हैं। लेकिन एक बात बतानी जरूरी है, तो इनकी जो इंटर कॉलेजिएट कॉम्पिटिशन है बहुत ही ऊंचे स्तर पे इनका कंडक्ट किया जाता है, और काफी जगह देखा गया है कि इनके राज्य को रिप्रेजेंट करने वाले लोग भी कई यूनिवर्सिटी से आए हैं। यस मैम। And we have other organizations that service the national sport organizations, such as, which pertains to many of you, the Coaching Association of Canada. It's been around since 1974. We have ma'am, almost... can you just show the previous slide, please? Because you have come to the next. Yes. Yes. Okay. No, again, it's changing. Okay, sorry. Coaching Association of Canada. Ma'am, you please, it's going ahead. It's okay, yes. fine, ma'am. So this is how our coaches are trained in our country and certified officially. ये कोचिंग एसोसिएशन है, मैडम बता रही कि हम लोग इन लोग जो कोच को कैसे उनको ट्रेन करते हैं, इनके सारे लोग क्वालिफाइड कोच होने चाहिए, तभी वो लोग कोचिंग ले पाते हैं। Yes, and so we have coaches for community sport, competitive sport, and instructional sport. कोचेस है कम्युनिटी, जैसे हम लोग बोलते हैं कम्युनिटी कोचिंग के लिए, कम्युनिटी स्पोर्ट के लिए अलग है, लेकिन जो ये लोग कंपटीशन पे जा रहे हैं उनकी कोचिंग वो अलग है, और ये जो सिखाते हैं कैसे पढ़ाना है वो उनके लिए कोच है। तो 3 तरह के इन लोग कोच की कैटेगरी कर रखी है। Diversity and inclusion is really important in our coaching certification program. So there are programs directed towards women, Aboriginals, LGBTQ, athletes with physical and mental disabilities, and also older or masters athletes. कोचिंग में अलग अलग इन्होंने इनका जो है इसमें दिखाते कि जैसे लड़कियों या स्त्रियों के लिए किस तरह से करना है, अलग अलग जो माइनॉरिटी जैसा बोलते हैं आदिवासी, अलग अलग लोगों के लिए ग्रुप्स के लिए, कई जगह ट्राइब के होंगे या उनका अलग कोचिंग रहता है। फिर हम बोलते हैं एथलीट्स में भी से ट्रांसजेंडर या इसके कई तरीके, तो उनके लिए अलग कोचिंग है। जो लोग जिनमें कुछ शारीरिक तौर पे मानसिक हम लोग बोलते हैं इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी या जिनको सुनने में, उनके लिए, और मास्टर्स एथलीट जो उम्र वाले हैं हम देखते हैं मास्टर्स स्पोर्ट के लिए, ये सारी की एथलीट की कोचिंग अलग अलग है, ये वो जरूर इंक्लूड करते हैं। I'm not going to speak to every slide, but these are just examples, other examples of an organization that promotes athlete leadership development. एथलीट स्कैन करके एक प्रोग्राम है यहाँ पे, जहाँ पे इन्होंने देखा कि जो काफी अच्छे एथलीट है वो जब रिटायर हो जाते हैं तो वो दूसरों को कैसे प्रोत्साहन करके उनको आगे ला सकते हैं। तो ऐसा एक लीडरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम इन्होंने किया, और ये काफी तरह से किया, जैसे कि कोई भी डिसीजन लेना हो, उनको सिखाना हो, वो लोग देखते कि पहले कौन अच्छे अच्छे खिलाड़ी थे उनको आइडेंटिफाई करके ये इस तरह का एक प्रोग्राम उन्होंने शुरू किया। यस मैम। And we have the Canadian Center for Ethics in Sport, that is our national anti-doping agency. कैनेडियन इनमें जैसे हमारे यहाँ भी नाडा है, इन लोग के यहाँ भी इनका एंटी डोपिंग एजेंसी है,
और एथिक्स के बारे में ज्यादा जानकारी भी जरूरी है, क्योंकि वही हमको सही तरह से वैल्यू सिखा पाती है, और ये लोग उसको सही तरह से उसी को फॉलो करते हैं। इसलिए एंटी डोपिंग का भी इन क्या है, हम लोग जिसमें वाडा नाडा, और सेम इज द केस विद ये कैनेडियन का। And we have one that is directed to women in sport to work towards equity and make sure that there is more attention paid to this underrepresented group. स्त्रियों के लिए भी इन्होंने एक एसोसिएशन खोला है, जिससे बच्चे और उनके लिए भी ये सिर्फ नहीं कि उनको ज्यादा मिले, लेकिन उनके हर जो भी जहां भी कम दिया उसके ऊपर ध्यान देके उनको भी मौका दिया जाए। उस तरह से इन लोगों ने अपना एक शुरू किया, इसलिए कैनेडियन वुमेन एंड स्पोर्ट बोला है। तो ये इनको लगता है तभी करेंगे, तभी एक सही तरह का बदलाव आएगा, जब सब एक साथ को डेवलप, जैसे लड़के लड़कियां या सबको एक जैसा मौका दिया जाए। तो इसीलिए हम बोलते हैं कि इसीलिए इस तरह का शुरू किया है। And we have another organization which is a national voice for Aboriginal sport. हम देखते हैं ना, जैसे हमारे यहाँ एक अलग अलग ग्रुप है, इनमें कई हैं जो उनके राज्य के नहीं है, वो कुछ किसी और वर्ग के होंगे, पिछड़े वर्ग के हम बोलते हैं, तो उनके लिए अलग तरीके की उनको भी कैसे खेल में शामिल किया जाए, उसके लिए उन्होंने अलग एक स्पोर्ट्स सर्कल बनाए, जिससे कि वो बच्चे भी इसमें शामिल हों। So these organizations demonstrate the attention that's being paid to equity, diversity, and inclusion. ये ऑर्गेनाइजेशन देखते हैं कि हर मामले में कोई छूट ना जाए पीछे, सब लोग को शामिल हो, इसलिए कि अलग अलग तरह के लोग जो भी हैं, बट सबको कैसे शामिल करके लेके इसमें इन्वॉल्व कर ले, इससे जिससे कि कोई भी बात छूट ना जाए। We have provincial and territorial sport organizations, similar again to most countries. India, you probably have state organizations as well. इनको प्रोविंशियल बोलते हैं, हमारे यहाँ स्टेट होता है, तो इनके यहाँ 10 प्रोविंशियल है और 3 टेरिटोरियल है। लेकिन ये लोग ज्यादातर अपने जो खिलाड़ियों पे ध्यान देते हैं, कोचेस पे, ऑफिशियल्स पे सारा ध्यान देते हैं, और इनका जो खेल है वो मिनिस्ट्री ऑफ हेरिटेज, स्पोर्ट, टूरिज्म एंड कल्चर इंडस्ट्रीज आया है। जैसे हमारे बोलते हैं यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स, तो इन लोगों का स्पोर्ट्स के साथ कल्चर, टूरिज्म सब आ गया है। And this is a provincial organization that is directed towards high school athletic associations. ये हाई स्कूल एथलेटिक एसोसिएशन का इनका एक फेडरेशन है, क्योंकि हमने यहाँ देखा नहीं स्कूल के लिए, हम देखते हैं स्कूल गेम्स, लेकिन हाई स्कूल गेम्स में एथलेटिक्स फेडरेशन है, जहाँ 18 रीजनल हाई स्कूल एथलेटिक एसोसिएशन वाले वो लोग आपस में भाग ले पाते हैं। तो उसके लिए एथलेटिक्स के लिए इज इट ओनली लिमिटेड टू एथलेटिक्स और इज इट स्पोर्ट? It is sport. So sport teams, high school teams that compete against each other. हम लोग यहाँ बोलते हैं ना स्कूल गेम्स फेडरेशन ऑफ इंडिया, उसी तरह से ये लोग इनको स्कूल एथलेटिक एसोसिएशन को कहा गया है, जहाँ हाई स्कूल के बच्चे भाग लेते हैं। And of course we have community sport organizations as well. अभी वहां भी उनके पास कम्युनिटी स्पोर्ट का भी ऑर्गेनाइजेशन है, जैसे ग्रास रूट कोचिंग है, कम्युनिटी लेवल पे है, लेकिन हमने वहां देखा कि ज्यादातर बहुत लोग वॉलंटियर माने बगैर कुछ लिए वो लोग काम करना पसंद करते हैं। ये हमने बहुत कॉमन देखा है कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, कई राज्य बहुत ऐसे भी करते हैं। तो ग्रास रूट इनके लिए होता है, नेशनल, स्टेट, लोकल, सब लेवल पर इनका है। Yes, ma'am. So one of the issues is, should the funding be directed more towards competitive sport or recreational sport, which is at the grassroots level? And a second question is, well, how can our competitive athletes do well internationally if they do not have sufficient financial support? अभी यहाँ ये पूछा गया है कि क्या हमको जो भी आर्थिक सहायता मिलती है, क्या उसको हमें कॉम्पिटिटिव स्पोर्ट में देना चाहिए कि ग्रास रूट लेवल पे देना चाहिए? लेकिन अगर इसमें हम देखेंगे कि ग्रास रूट तो काफी लोगों को मिल सकता है, लेकिन क्या वो सही रहेगा? फिर दूसरे बोलते हैं कि कॉम्पिटिटिव लेवल पे अगर बच्चों को उनको आर्थिक सही सहायता नहीं दिया, वो कैसे उभर पाएंगे, कैसे आ पाएंगे? क्योंकि उनको भी आर्थिक सहायता बहुत ज्यादा जरूरी है। So I'm going to talk about Canada,
and keeping people active. However, I just wanted to mention this global issue of obesity, and it's having a huge impact all around the world. And these are predictions, very scary predictions of the number of people who could be considered obese by 2050. So 60% of men and 50% of women and 25% of children. अभी मैंने रिसर्च बताया कि जो मोटापा की जो समस्या है वो पूरी दुनिया में है, और ये बता रहे कि 2050 में देखा गया है कि जब तक हम लोग 60% जो है आदमी लोगों में, 50% स्त्रियों में और 25% बच्चों में भी देखा जाए कि ये लोग मोटा पाएगा। ये इन्होंने प्रेडिक्ट किया, ये स्टडी ने इन्होंने प्रेडिक्ट किया कि ये है आगे जो होने वाला है। So the obesity has really increased over time, and we know that it is preventable. So you as physical education teachers and coaches play a big role in getting people active and keeping them active. अभी हम सबको पता है कि ये मोटापा बहुत बड़ी समस्या है, और इससे काफी बीमारियां भी हो सकती है, लेकिन ये हम इसको हम रोक सकते हैं, माने इसको हम कितना भी कम कर सकते हैं, सब हमारे हाथ में है। तो मैडम बोलती है हम सारे जो फिजिकल एजुकेशन टीचर्स हैं यहाँ पर, उन लोगों को जरूर ध्यान देना चाहिए कि ये समस्या हम हो सके तो जो आगे फ्यूचर में ना आए, सब लोगों को शारीरिक तौर पे काफी एक्टिविटी देके ये समस्या से हमें इसमें से बाहर उभरना पड़ेगा। हम जल्दी से बंद नहीं कर पाएंगे, लेकिन इसको जरूर परसेंटेज को कम कर सकते हैं। So it used to be smoking that was the major concern for health, and now we know that it's too much sitting in front of computers and playing video games and not being physically active enough. अभी हम पहले लोग सोचते थे जो धूम्रपान की वो इस्तेमाल करते थे, हमें पता है वो सही नहीं है, बहुत गलत है, लेकिन आजकल तो उसे कम कर दिया है, सबको लोगों को मालूम पड़ गया है कि ये अच्छा नहीं है। लेकिन आपने देखा कि कितने लोग कितने घंटों बैठते हैं। तो आजकल जो नई बीमारी है, हम स्मोकिंग की बीमारी, वो बैठने से बोलते हैं। जो आजकल नई धूम्रपान का जो लक्षण है वो हम बोलते हैं बैठने से हो रहा है। इसलिए बोलते हैं अगर कोई 20 मिनट या आधा घंटा बैठता है तो हम बोलते हैं कि उसने एक सिगरेट स्मोक किया है, ऐसा हम लोग यूजुअली बोलते हैं। तो अभी जो नई बीमारी है वो है बैठने की बीमारी। Yes, ma'am. So there are all sorts. Madam, can you just show the e-sport? Tell them about the e-sports, please. The previous one. Yes, it's just to demonstrate that a lot of the activity now centers around using computer screens, and we all know that esports has become extremely popular around the world, but one will question you're exercising the brain very much, and of course there's arm movements, but what about the physical aspect of it? अभी आपने देखा ई-स्पोर्ट काफी बहुत तेजी से फैल रहा है, लेकिन इसमें हम लोग दिमाग की तरह हम खेलते हैं, हम लोग हाथ पे बैठ के ही खेलते हैं, लेकिन वो दिमाग के तौर पे काफी उसके हम बोलते हैं एक्सरसाइज, लेकिन शारीरिक तौर पे ये कहाँ तक होगा, ये एक बहुत बड़ी समस्या है। And this is another example where technology has played an increasingly important and relevant role in terms of some of the devices that people can wear and measure their heart rate and their speed, and it is not just watches and phones, it's even clothing. अभी आप देख रहे हैं कि टेक्नोलॉजी ने क्या बदलाव लाए। अभी हमने सब वॉच के बारे में सुना, लेकिन वॉच के अलावा वॉच हुआ, मोबाइल एप्स हुआ, लेकिन आप वर्चुअल लैब, लेकिन आजकल जो कपड़े भी पहन के उससे किस तरह से मालूम पड़ता है। तो आजकल इतनी ज्यादा बदलाव आया है कि हर जगह टेक्नोलॉजी बहुत ज्यादा काम कर रही है और किस तरह से ट्रेनिंग में मदद कर सकती है। तो इसलिए बता रहे, क्योंकि आपने कब सुना होगा जो कपड़े हैं जो हम पहन रहे हैं उससे हम कुछ कर सकते हैं। yes. So 3 trends in Canadian sport are physical literacy, and that's making sure that people have the skills and the motivation
and the understanding of the physical in order to carry on with physical activity. So the second one of long-term athlete development is related to physical literacy, and that means developing at an early age the physical skills, building confidence so that it is fun. And if it's fun, then hopefully it will be something that individuals will continue to do throughout their lifespan. So to be physically active throughout. And equity, diversity, and inclusion would be another trend that I've already mentioned. अभी ये जो कनाडा में जो कैनेडियन खेल में ये देखा गया फिजिकल लिटरेसी, आपने सब सुना होगा फिजिकल लिटरेसी के बारे में। आजकल बोलते हैं फिजिकल एजुकेशन क्लास में सारे बच्चों को ऐसा बेसिक स्किल सिखाना चाहिए जिससे कि वो उसमें वो कुछ भी चलने में, हर जो बेसिक मूवमेंट करने में उसमें उतनी आत्मविश्वास हो। लेकिन इन्होंने फिजिकल लिटरेसी के साथ ही आया लॉन्ग टर्म एथलीट डेवलपमेंट प्लान, LTAD बोलते हैं, क्योंकि आजकल देखा कि शुरू से स्पेशलाइज नहीं करते हैं। जब बच्चे को बेसिक स्किल आ जाता है उसमें जब आत्मविश्वास आता है और उसमें मनोरंजन होता है, इसके द्वारा हम एक पर्टिकुलर स्टेज में बच्चा हर खेल जब खेलता है तो वो तैयारी होती है। इसका एक कई स्टेजेस हैं लॉन्ग टर्म एथलीट डेवलपमेंट प्लान में। लेकिन अगर वो मनोरंजन हुआ तो हो सकता है कि ये बच्चा आगे बढ़ के इस खेल को कंटिन्यू करे। And the economic impact of increasing physical activity and decreasing being inactive is very important. In Canada, only 15% of adults get the recommended 150 minutes per week of moderate to vigorous physical activity. So the point I want to make is that if we can get people more active, that it has an economic impact in terms of reducing the amount of money that we spend on healthcare. मैम बता दी कि अभी कनाडा का देखा जाए सिर्फ 15% है। ये देखा है कि हमारी आर्थिक स्थिति, क्योंकि लोग बीमार पड़ते हैं जब उनको एक्टिविटी नहीं करने की वजह से जो बीमारी होती है उसमें बहुत खर्चा जाता है। तो हम खर्चा कैसे कम कर सकते हैं? अभी कनाडा में देखा कि सिर्फ 15% लोग हैं जो लोग विगरस फिजिकल एक्टिविटी, क्योंकि हम लोग बोलते हैं विगरस, हम सिर्फ विगरस टू मॉडरेट पे ला रहे हैं। तो इस तरह से सॉरी मॉडरेट टू विगरस एक्टिविटी सिर्फ इतने लोग 15% ही कर रहे हैं। लेकिन इसमें देखा गया जो इतना नहीं कर रहे हैं तो वो बीमारी के लक्षण है। तो बीमार होंगे तो नेचुरली उनको ज्यादा पैसा खर्चा करना पड़ेगा। तो गवर्नमेंट की जो आर्थिक स्थिति पे उस पर असर कर सकती है। तो हमें बहुत जरूरी कि लोगों को इसके बारे में एक जागरण दे, उनको बताएं कि इससे क्या होगा, आपका सेहत भी अच्छा होगा, गवर्नमेंट का पैसा भी कम रहेगा। तो ये एक बहुत अच्छा तरीका है शारीरिक क्रिया के द्वारा हम कैसे आर्थिक स्थिति एक राज्य का अच्छा बना सकते हैं। Quality daily physical education is something that we have worked towards in Canada for decades, and we have not achieved it. In my province, only 45% of the schools have a specialized physical education teacher. And only a quarter of the schools have daily physical education. We have physical education from age 5 in elementary schools and high schools, but not every day. And that's what we have always been working towards. So the point I want to make is that it is an attitude change that we need to make, and a shift in priorities to recognize that physical activity is essential to learning. And actually, young people do better if they are physically active. अभी ये क्वालिटी डेली फिजिकल एजुकेशन जो है, इन पे काफी इनको अनुसंधान रिसर्च भी किया है, और इन लोगों ने बोला कि किंडरगार्टन से 12वीं क्लास तक इन सबको फिजिकल एक्टिविटी देंगे। लेकिन इसके बावजूद भी सिर्फ 45% ऑफ स्कूल्स ही हैं जहां पर ये लोग
एक जो क्वालिफाइड पी टीचर्स है, स्पेशलिस्ट पी टीचर्स है, लेकिन और सिर्फ 25% है जहां इनका रोज का रहता है, लेकिन और सब जगह देख नहीं पा रहे क्योंकि जो पेपर में लिखा होता है सही तरह से वो कम है। तो मैडम ये कहती कि हमें इसको एक बदलाव लाना पड़ेगा कि जो शारीरिक शिक्षा उसको महत्व देके, क्योंकि अगर बैठे रहेंगे वो एक्चुअली हमको सीखने में भी हमारा सेहत हम लोग सही तरह सीख नहीं पाएंगे, बोलते लर्निंग। अगर सही तरह सीखना है तो हमें एक्टिव होनी चाहिए, तो एक्टिव होंगे तभी हम सीख पाएंगे। तो इस तरह से एक बदलाव लाना बहुत जरूरी है। तो हमें कोशिश करनी चाहिए मैक्सिमम की फिजिकल शारीरिक शिक्षा एक रोज बच्चों को मिले और सही स्पेशलिस्ट टीचर्स पढ़ाएं, और सबको ये देना है कि बच्चे इस तरह से पढ़ेंगे तो वो अच्छा तरह से एकेडमिक्स में अच्छा मार्क्स भी एकेडमिक्स से ला पाएंगे, वो सही तरह से एकेडमिक्स कर पाएंगे। So there are efforts at mixing physical activity in the classroom with exercise breaks. So for instance, in a mathematics class, to have maybe a 5-minute physical activity break. And it has been found through research that students actually do better in those classes when there are physical activity breaks. अभी बता रही थी कि बच्चे को अगर का जो मैथमेटिक्स का क्लास है, इन्होंने बीच में एक अनुसंधान किया तो देखा कि क्लास के बीच में जब 5 मिनट का ब्रेक दिया, बच्चे थोड़े से फिजिकल एक्टिविटी क्लासरूम में ही कराया, उसके बाद दोबारा जब इन्होंने मैथ्स की जो उनको प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए दिया था वो अच्छा कर पाए। तो ये बहुत दिखाता है कि थोड़ी सी शारीरिक क्रिया हो, थोड़ी जब हम शरीर को हिलाते हैं इसकी वजह से काफी ये चलन की वजह से काफी बदलाव आती है, जिससे बच्चा और भी अच्छा दिमागी तौर पे कर पाते हैं, वो कॉम्प्रहेंड कर पाते हैं, वो सही कर पाते हैं। I have the next number of slides. Just indicate to you, we have Canadian Physical Activity Guidelines. And this one, for instance, is for from birth to 4 years. And the next slides are different age spans, but they are guidelines for the number of minutes that that age group should be physically active. So this is 0 to 4 years, 5 to 11. So we get up to 60 minutes here. Still 60 minutes for 12 to 17 years. Then from 18 years and older, 150 minutes, even for those 65 years and older. अभी आप देखेंगे कैनेडियन जो इन्होंने अपनी गाइडलाइंस दी, आप देखेंगे 0 से माने बच्चे का जब जन्म होता है उससे 4 साल तक का एक्टिविटी उन्होंने वो भी दिया है, वहां से कितना ब्रेक दिया है आप देखेंगे। 65-60 से ऊपर, 18 से 64 इयर्स तक, और 5 से 11, 12 से 17। तो इस तरह से उन्होंने काफी ब्रेक दिया, कितना देना चाहिए। अच्छा गाइडलाइंस लेके आए जिससे कि उनमें एक समझ आ जाए कि शारीरिक शिक्षा, शारीरिक क्रिया कितनी जरूरी है। And we have some programs that I'm just going to speak very briefly to because of time. And the first one is called ParticipACTION. And this organization has been around since 1971. And it was formed at that time because there was a study done comparing a 30-year-old Canadian to a 60-year-old Swede. And it was an embarrassment that a 30-year-old Canadian was the equivalent to a 60-year-old Swede. So as a result of that, this organization was formed to promote physical activity and healthy living in our country. Could I just speak about that? अभी आप देखेंगे ParticipACTION है, ये इनका एक प्रोग्राम चला कनाडा में, और ये कैसे शुरुआत हुई, ये 1971 में इसकी शुरुआत हुई। इन्होंने देखा कि एक बार जब इन्होंने नोटिस किया, देखा कि जो शारीरिक क्षमता है कैनेडियंस का जो 30 साल का है और 60 साल की जो स्वीडिश है, इन्होंने देखा कि 30 साल का जो कैनेडियन है वो 60 साल के स्वीडिश के बराबर थी।
तब उसमें उनमें ये आई कि ये तो बहुत गलत हो रही है, ऐसा है तो आगे जाके कैंडिडेट से क्या होगा। इस तौर पे इन्होंने ये प्रोग्राम की शुरुआत किसको बोलते हैं, पार्टिसिपैक्शन, एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है। और इसके तरह से ये लोग क्या करते हैं, काफी टीवी का एड देख के पूरे कनाडा भर लोगों को एक जागरण, जिससे कि उन लोग में जागरूकता आ जाए कि अगर हम इस तरह से नहीं करेंगे तो आगे जाके हालत बहुत खराब होगी। इस तरह से उन्होंने पार्टिसिपैक्शन का प्रोग्राम शुरू किया। So this program definitely wants to increase physical activity and make sure that people are active every day. So they involve programming for schools and companies, the government, and programs that people can work on individually. ये वीमूव का प्रोग्राम है पार्टिसिपेक्शन का, तो बोलते हैं स्कूल में, उनके पेरेंट्स के लिए, कंपनीज में, गवर्नमेंट लेवल पर, और हम अपने आप भी स्वयं करके इन्होंने पूरे देश भर एक जंग जैसा शुरू किया, जिससे कि लोग हिले, जो लोग मूव करें, उसका शुरू किया था इन लोगों ने पार्टिसिपेक्शन के द्वारा। So this is just an example of a program at a workplace getting the employees active throughout the day. एक एग्जाम्पल दिखा रहे हैं कि इवन कोई भी काम भी कर रहे हैं तो आप देख रहे हैं थ्रू दिन भर कैसे वो अपना थोड़ा सा एक्टिव रहे, इसलिए वो एक उदाहरण दिया यहाँ। And also to get communities active and to compete against each other for how many minutes of physical activity they can do in a particular time period. एक बहुत अच्छी है कि इन्होंने क्या किया, अलग अलग जो कम्युनिटी है, हम लोग बोलते हैं कम्युनिटी लेवल पे, इन लोगों ने एक दूसरे को चैलेंज करना शुरू किया है। तो कम्युनिटी आपस में कंपटीशन इन्होंने रखा कि कौन ज्यादा एक दूसरे को चैलेंज कर सकता है। तो इस तरह का ये पार्टिसिपेशन के द्वारा ये काफी दूर तक पहुंच पाया, काफी कम्युनिटीज तक पहुंच पाया। And there are programs that are directed towards children, because with a report that came out in 2016, it compared children's physical activity across 38 countries, and Canada did not score very well. And during that report, it was determined that not even 10% of children get the recommended 60 minutes of activity per day. So often people will use our climate, such as our cold winters, as an excuse, but that has to change in terms of the mindset, because you can do things outside and be physically active all year round. अभी आप देख रहे हैं कि कनाडा में बच्चों पे उन्होंने देखा कि इन्होंने अनुसंधान रिसर्च किया, 2016 में था। तो इन्होंने देखा कि रिपोर्ट कार्ड में जो बताया कि इन्होंने 38 कंट्रीज, राज्य से इन लोगों ने रिसर्च कंडक्ट किया, और ये लोग देखे कि यूएस, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, स्पेन थे, ये लोग डी कैटेगरी में आ रहे थे, माने इनको जो मॉडरेट टू विगरस एक्टिविटी नहीं हो पा रही है। और आप ये भी देखेंगे कि बेल्जियम, चाइना, चिली, कतार, स्कॉटलैंड, ये लोग एफ में आ रहे थे, माने वो फेल हो रहे थे। तो हमें दिखता है कि राज्य बहुत अच्छा कर रहा है, लेकिन हम देख रहे हैं कि जो राज्य डेवलपिंग कंट्रीज में आता है, उनमें भी जो है शारीरिक क्रिया जो है वो काफी कम है, और सिर्फ 9% है जो कनाडा में जिनको 60 मिनट तक शारीरिक क्रिया रोज करते हैं। लेकिन इन लोगों का एक बहाना है कि बहुत ठंड है, मौसम है, बर्फ है, इसलिए हम एक्सरसाइज नहीं कर पाते। लेकिन जो राज्य से स्लोवेनिया है, इसने टॉप किया, जहां 86% बॉयज और गर्ल्स इन लोगों को रेकमेंडेड, माने मॉडरेट टू विगरस फिजिकल एक्टिविटी वो लोग में करते हैं। So there have been programs for teenagers and for younger children to keep them active, and also to use some of the technology to keep track of the number of minutes of physical activity. टीनेजर्स के लिए जो हम लोग बोलते हैं एडोलसेंट्स का, क्योंकि कई प्रॉब्लम्स होती है बच्चों के लिए। इसके अलावा टेक्नोलॉजी के द्वारा हम कैसे जो फिटनेस करते हैं, आप देखते हैं काफी एप्स हैं, तो उसको किस तरह से हम अपने बारे में ट्रैक कर सकते हैं कि हम लोग कहाँ तक पहुंचे, हमारी क्षमता कितनी है। तो ये सारे वहां प्रयोग में लाते हैं।
So the strategic plan is obviously to take an inactive person and make them physically active for optimum health. पार्टिसिपेशन की एक उद्देश्य है कि जो लोग बिल्कुल भी शारीरिक क्रिया कम कर रहे हैं, उनसे कैसे भी हो, उनसे थोड़ा सा शारीरिक क्रिया को बढ़ाया जाए, जिससे उनका स्वास्थ्य अच्छा हो, सेहत अच्छा हो। ये इनका जो भी नहीं कर पा रहे, तो इस तरह से लोग उनको टेस्ट भी करते हैं। उसके अलावा उनमें बदलाव लाके, जिससे कि वो फिजिकल एक्टिविटी में थोड़ा मनोरंजक होके वो लोग उसमें लगातार लगे रहे, जिससे वो स्वास्थ्य, उनको अच्छा स्वास्थ्य हो। और मैं मैडम बार बार कह रही कि आर्थिक स्थिति, जो देश की आर्थिक स्थिति में इसका बहुत ज्यादा असर है, वो भी हम कम कर सकें। And we have programs directed to kids sport for those who cannot afford the finances to participate in sport. This organization does that, and there are chapters across the country. So a community could apply for funding to support a program for children who do not have the money to participate in sport. And there are opportunities to donate money and to volunteer to help out with these programs. अभी कई बच्चे की आर्थिक स्थिति इतनी अच्छी नहीं होती, क्योंकि हमारे राज्य जैसा नहीं है, वो लोग उसमें भाग नहीं ले पाते। तो इसके लिए ये ऑर्गेनाइजेशन आई है, जहाँ बच्चे जिनकी आर्थिक स्थिति कम है, जो 18 साल के उम्र से नीचे है, वो लोग उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं और उसके द्वारा उनको खेल में भाग ले सकते हैं, क्योंकि ऐसे बहुत सारे बच्चे होते हैं। और इसमें और लोग जो है, उसमें इसको या तो पैसा हम लोग डोनेट कर सकते हैं, या अपने आप ही हम अपनी सेवा के तौर पे हम अपना सेवा दे सकते हैं, जिससे कि ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस की मदद करें। I don't know if you have this game in India, but it's called dodgeball, where you throw the ball and you try not to be hit by the ball. But this is an example that kids sport put on a dodgeball tournament. We do have it in India. Dodgeball का खेल दिखा रहे हैं, लेकिन बच्चों का dodgeball, there are a lot of variations in dodgeball. We do play dodgeball. ये dodgeball है, आप देख रहे हैं। All right. We have another program, or a movement, I should say, called Canadian Sport for Life. And it is a movement to improve the quality of sport and physical activity in Canada. And this is done through improving athlete training. So I'll just spend a minute talking about it. ये कैनेडियन स्पोर्ट फॉर लाइफ है, एक ऐसा है कि एक मूवमेंट है, ये प्रोग्राम करके नहीं है, क्योंकि इसमें लोग देते हैं किस तरह से खेल का और एथलीट को और शारीरिक क्रिया को कैसे बढ़ाया जाए, और ये मेनली एथलीट को ट्रेन करने में उनको, जिससे कि वो कैसे लोगों से सहायता ले, जो कि जिससे कि स्पोर्ट की जो सिस्टम अच्छी हो और बच्चे उस खेल में अच्छा उभर पड़े, तो किस से उनको मदद मिल सकती है। तो मैडम इसके बारे में अभी एक्सप्लेन करेंगे। यस मैम। So this focuses on the trend that I already mentioned of long-term athlete development, to get a child active at a very early age. And this there are programs for each of the age categories or spans throughout one's lifetime. अभी ये लॉन्ग टर्म एथलीट डेवलपमेंट आपने देखा होगा, ये कि शुरू में बच्चे जैसे बच्चे का जन्म है 0 से 6 साल तक, फिर 6 से 9 आप ये फंडामेंटल मूवमेंट स्किल्स, उसके बाद कैसे सीखना है ट्रेन टू ट्रेन, लेकिन लास्ट में देख रहे हैं कि जो जीतना है, कंपटीशन में भाग लेना या जीतना, वो तो 18 प्लस के ऊपर है, लेकिन जो कंपटीशन में भाग ले रहे, लेकिन वो जिंदगी भर एक्टिव रहने की एक सीख उनको मिल जाती है। तो ये इसको बोलते हैं लॉन्ग टर्म एथलीट डेवलपमेंट प्लान का कई फेसेस दिए हैं। यस मैम। So to get children active at an early age, this is an example that a parent or a coach or a child could look at, and it's cross-country ski long-term athlete development, but there would be one for every sport.
and it shows you through the long-term athlete development stage who is responsible for putting on those programs. And again, this is just an example of one sport. अभी बता रही थी मैडम कि इन्होंने एक एग्जांपल दिया कि बच्चों की जो ट्रेनिंग हम भी देखते हैं, तो इसमें इतने साल की उम्र में जो उम्र है, जैसे 0 से 6 साल तक है, तो इसमें कौन इसके लिए कौन करवाता है, कौन इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, तो उसमें बता दें कि जैसे पेरेंट्स है या कोई क्लब का होगा। तो इसमें ये दिया है कि जो भी एज है, जो भी एक्टिविटी है, जैसे फंडामेंटल मूवमेंट्स है कि लर्निंग ट्रेन है, इसके लिए ये लोग देखते हैं कि कौन उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, वो भी तय किया जाता है, उसके मुताबिक ही वो लोग मूव करते हैं। ये नहीं कि हम लोग इसका ये सब स्ट्रक्चर्ड है, आप देख रहे हैं बहुत स्ट्रक्चर्ड इनका जो प्रोग्राम बना है। यस मैम। And there are all sorts of programs directed to special groups. Remember, I talked about diversity or equity, diversity, and inclusion. So there's programming in this movement for all these groups: athletes with disabilities, coaches, educators, recreation professionals, women and girls, parents, health practitioners, indigenous peoples, and immigrants or newcomers to our country. इन लोगों में जो प्रोग्राम है, तो इसमें देखा गया कि जैसे विकलांगता है, हम लोग मैडम डिसेबिलिटी के बारे में बोली, बच्चों के लिए हो सकता है, या जो बाहर से जो लोग आते हैं उनके लिए हो सकता है, स्त्रियों के लिए, बच्चों के लिए, कई लोग नए होते हैं, और जैसे रेफ्यूजीज के लिए, जो आदिवासी लोगों के लिए, हर लोगों के लिए, सबके लिए कोई छूट न जाए। तो इन लोगों ने सबको एक साथ लाके कैसे शामिल करके, और पूरा इनका जो राज्य में जो भी रह रहे हैं सबको सबका जो शारीरिक क्रिया है वो कैसे बढ़ाया जाए, खेल में कैसे भाग लें जिससे कि वो मनोरंजन हो, इसका ये लोग ये प्रोग्राम करती है। And education is important, so there are actual written resources or manuals to help those who are going to deliver the programs. And these are just examples of some of the written resources, for instance, for parents or for those dealing with athletes with a disability. इसमें आप देखें सारी रिसोर्सेस है जहाँ डॉक्यूमेंट की है, किताबें ली है जो कि पेरेंट्स के लिए फायदा हो सकता है, नहीं तो एथलीट्स के लिए, नहीं तो जो विकलांग एथलीट्स है सबके लिए। तो काफी जगह इनके पास रिसोर्सेस मिलते हैं जो कि उसका फायदा उठा के वो लोग पढ़ के उसके बारे में ज्यादा जानकारी हो, इसे रिसोर्सेस भी अवेलेबल है जो कि फ्री रहता है, उसमें से ले सकते हैं। And there are also international projects to advance the physical literacy and long-term athlete development around the world. So you can see here in the Caribbean, in Andhra Pradesh, in St. Lucia, in the Caribbean as well, are examples. So it's to train people in other countries to carry on this movement of sport for life. अभी कनाडा में स्पोर्ट फॉर लाइफ में इन्होंने अपने अंतर्देशीय जो है कैसे जिनको जरूरतमंद को कैसे खेल के द्वारा सहायता की जाए। तो कैरेबियन में क्या है, भारत में भी, आंध्र प्रदेश में हम देख रहे हैं फिजिकल लिटरेसी की कैंपेन शुरू की है, स्पेशली ऐसे बच्चे जिनको खेल में आगे मौका नहीं मिल रहा था। ऐसी अलग अलग देश में इन लोगों ने अपना प्रोजेक्ट किया है, इसलिए है स्पोर्ट फॉर लाइफ, माने जीवन के लिए किस तरह से खेल उपयोग में लाया जा सकता है। And so this international movement is to educate, train, mentor, and facilitate this sport for life. तो अभी आप ये देख ही रहे हैं इधर हमारे गोपीचंद सर, और ये जो यहाँ पर हमारे 2 साल वी हैड द स्पीकर गोपीचंद सर, एंड they were there for us for taking a session. It's a particular group from ELB Sports. They were already there, whom we can see on the picture on the left hand side for physical literacy. और आप इधर देख रहे हैं दोनों भारत का ही पिक्चर दे रखा है, जहाँ इन्होंने स्पोर्ट फॉर लाइफ जो है उसके द्वारा कैसे उनको शिक्षा दिया जाता है, कैसे ट्रेन करते हैं, कैसे मेंटरिंग करते हैं, ये सिस्टम भारत में भी इन्होंने शुरू किया। यस मैम। Yes,
just for the essence of time, just speak briefly because we're all feeling the impact of COVID-19 on physical activity. We know that fitness apps on telephones and computers have been downloaded more. There's an increase in that. Video games, people are playing more of those because they can't participate. People are watching more television. And in North America, 3/4 of the population actually gained weight. So there are some negatives around this, and what we want to make sure as physical educators and coaches is that we try to promote physical activity even during this time period. अभी शारी शीशा कोविड में काफी देखा होगा कि काफी लोग काफी एप्स डाउनलोड किए हैं, लेकिन ज्यादातर लोग वीडियो गेम्स पे ही है। टीवी भी काफी घंटे, बोलते हैं एक हफ्ते में देखा है कि 40 से ऊपर घंटे बैठे हैं। लेकिन नॉर्थ अमेरिका में देखा कि 70% से ऊपर लोगों ने अपना उनका जो वेट ही बढ़ गया है। तो ये क्लियरली दिखाता है कि इसमें कई नेगेटिव्स है। कोविड की वजह से हम बोलते हैं कुछ पॉजिटिव होगा, लेकिन काफी था, क्योंकि जो बाहर जाके खेल नहीं पाते हैं, इसलिए वो लोग कमरे के अंदर ही बैठे रहते हैं। इससे ज्यादा नुकसान पहुंचा रहा है। यस मैम। So we have people with home gyms nowadays, but youth sports have really felt the impact because a lot of the clubs and facilities have been closed. आजकल काफी जगह घर पे ही जिम खोला गया है, और यूथ जो है, युवा बच्चों का जो स्पोर्ट है, वो उसपे बहुत असर पड़ा है, और मानसिक तौर पे भी बहुत असर पड़ा है। तो ये कई जगह ये सब बंद हुए हैं। तो ये बहुत जगह बच्चे जो बाहर जाके खेलते थे, वो लोग अभी खेल नहीं पा रहे हैं, उससे उनपे बहुत ज्यादा असर पड़ा है युवा पीढ़ी पे। And just I'm going to finish up here, just mentioning the World Association for Sport Management. Dr. Usha had mentioned that I currently am privileged to be the president of this organization. And it is an umbrella organization of sport management for the 6 other regional associations around the world. मैम जस्ट आई लाइक टू स्पीक। तो मैम जो है, मैडम फाउंडर थी जिसने शुरू किया वर्ल्ड एसोसिएशन ऑफ स्पोर्ट मैनेजमेंट का। लेकिन आप देख रहे हैं कि अभी ये वर्ल्ड एसोसिएशन स्पोर्ट मैनेजमेंट के नीचे कौन कौन आ रहा है। नॉर्थ अमेरिकन है, यूरोपियन है, एशियन भी है। एशियन का भी मैडम ने शुरुआत की है, अफ्रीकन है। ये सारे के ऊपर जो है, जो मेन है, वो है वर्ल्ड एसोसिएशन ऑफ स्पोर्ट मैनेजमेंट। यस मैम। And our organization was formed in 2012. And as you can see with this map, it does represent all the regional associations. We've held 3 conferences in Spain, Lithuania, and Chile. And our next conference is in Doha, Qatar, 1 year from now in March of 2022. So we hope that some of you from India might attend this conference. We welcome you. Certainly, we produce a book series, and we participate in developing partnerships. So this is where we would be happy to get involved with organizations in India. अभी मैम बता रही कि मैडम जैसे ये वर्ल्ड एसोसिएशन ऑफ स्पोर्ट मैनेजमेंट, इनकी कई कॉन्फ्रेंसेस रहती है सालों से। तो अभी अगला जो कॉन्फ्रेंस है 2022 में, वो दोहा में, कतर दोहा में। और इसके लिए इसका एक बुक सीरीज निकलता है। ये काफी ऑर्गेनाइजेशन से इनके पार्टनरशिप है। लेकिन आप सबको भी इन्होंने आमंत्रण किया, इन्विटेशन दिया है कि आप जरूर हो सके तो भाग लीजिएगा, क्योंकि ये दोहा में 1 साल है अभी। तो आप में से कोई पेपर पसंद कर सकता है, या आप उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, और दोहा में अगर हो सके तो भाग भी लीजिएगा। Yes, ma'am. So how India can become involved is to join the Asian Association for Sport Management, and then the things that I just mentioned. अभी भारत अगर लेना चाहता है, भारत में you mean if India would like to become a member of WASM, first we have to become a member of Asian. Well, that would be a good idea, but India could form its own sport management association,
and could also be a member of both the Fine. Asian Association and the World Association. Sure, you're going to help us in building that because we look forward when you are there. That's We right. definitely like to have Dr. Kishore would be very keen because we are looking forward to start an association. If you can help us and guide us, please. Yes. And I would like to leave you with a video of this individual. He is from Punjab, but he lives in Canada now in one of our 3 northern territories called the Yukon. He came to Canada in 2006. He is a musical artist, and he has shared Bhangra dancing with Canadians. And I'd like to share this video with you now. And this takes place in Yukon. And let me get that going. अभी आप सब देखेंगे एक मैडम वीडियो शेयर करने वाली है जहां हमारे भारत के एक पंजाब से है वो कनाडा में थे उन्होंने वहां भांगड़ा शुरू किया है तो आप सब ज्वाइन कर लीजिए भांगड़ा के लिए आई रिक्वेस्ट all to join for this particular dance of bhangra which is such an energetic dance and from India. Okay, my friend, make sure that you don't slip. Pretend you're not cold. Music, Pranish, you can't hear that. Can't hear the music. Music. Better, madam. Ma'am, the music isn't audible. Now the sound is less. Oh, you don't hear the sound? Yes. If the YouTube will try putting that. And we can ask all our participants to join because today we'll have all of them joining too. You have the link? Okay, my friends, Okay. make sure that you don't slip. Pretend you're not cold. Great. It was energetic. So you got a glimpse of India. Well, Punjab. I think that the point of this is that you as physical education teachers and coaches and we who have been speaking are all champions and models, role models. And we are able to make change and motivate people to get physically active. So this individual is a perfect example
who's had a huge impact. And I think it's a wonderful way to end and brings it back to India. Thank you. Oh, thank you so much. So you took from India, you brought in this. That's great. I think it's a long time because it's fun dancing. It was such a Yes. wonderful session. Could you say something? Just one question. What about the volunteer? Because when you talk of a country like India, where we talk of paid becomes a problem when we reach the community level. So how do you think, do you think you could suggest us when we talk of, how could we pool in, get in resource, but it should be unpaid. So we could say volunteer. So how do you suggest, what could you suggest in that case? Do you mean to motivate volunteers? Volunteers, because we have a problem is we have dearth of coaches. We won't be able to reach out to this particular huge mass, especially the community level. So we don't have a trend of this volunteers coming in. So far, not much. But in countries like maybe Canada or Australia, there are some countries where you find volunteers, they do volunteer a bit. So how could we start, or how could we come up with this? Yeah, well, I think you've got to find a champion, and a champion then will hopefully try to attract volunteers, and that would be through a network system, and hopefully that would grow. Now, in my own city of London, and it would be the same for all of you as well, we would try to bring in a sport event of interest to the community, and through the local clubs specific to maybe that sport, we would put out a request for volunteers. And what we found is when we first started to do this many years ago, there was great enthusiasm because it was an activity called the Canada Summer Games, and it was for children. And when you have activities that are directed towards children, it's more likely that you're going to get involvement of volunteers. And that's similar to charity organizations that are focused on children. There's more of a sense of willingness to either donate financially or to volunteer. So my suggestion, and others will have their perspectives as well, is to, start with someone who can have an impact, who might be known and who is a champion, and to try to bring in some activity that might be of interest and perhaps gear it towards children. Thank you, Karen. It was such a wonderful session because it was such a vast thing, but it was very informative. And I wish India too could get in something, small things we could start with in India too. Yes. Thank you so much. I think since we are running short of time, Dr. Rosa Lopez, ma'am, for your remarks, please. Thank you, Karen. Very informative and very nice session. Congratulations. I have two questions, Karen. One is, recently I have read that Canada is one of those countries that is doing better related with women's empowerment in different positions. Would you say that because of the existence of this women organization that it was caused in the past and now they change name? I mean, it's because of this input they have had in there? This is my first question. The other question, when I observe all the projects and the structure that Canada has, I mean, it looks fantastic and it looks very organized, and that the government gives plenty of support to the development of various projects. I mean, I would say government and private initiative, but always the government. I mean, it's obvious there is great support there. So my question is, what do you think is missing? Because it seems that you have everything. So what is missing? What do you think could be improved? Okay, well, thanks for those two questions, Dr. Rosa. With the first one, the women in sport, yes, I think the Canadian Association for the Advancement of Women in Sport, which is now called Canadian Women in Sport, was instrumental in trying to increase the attention paid on getting women involved in not only participation
in sport and to increase that, and not just women, I should say girls and women throughout the lifespan, and also to focus on getting more women involved as coaches and to be role models and to be in senior management positions in sport organizations. But you asked me, was it just that? And I would say, no, it wasn't just that. I think there's an international attention being paid now because of some incidents that have happened in other spheres outside of sport, that, for example, with harassment and workplace organizations, and more women feeling more confident to come forward and speak up. And I think that that has transferred and helped the attention being paid for equity, diversion, and inclusion. But I would also say that we still have a long ways to go in Canada. We may have these organizations, but it's still disappointing, in my view, the number of female coaches in head coaching positions and at senior levels of organizations. So despite these world organizations and the national ones that we have in Canada, we still have a long ways to go. So, and in response to your second question, yes, we do have a lot of programs in place, but I would say these organizations would respond to your question, and they would say, we need more funding. We need more support from the national or the federal government to do the things that we want to be able to do. So it, not so much well, of course, the human resources are tied into the financial resources, because if you don't have the financial resources, you can't hire the people and have the human resources to enact change and improvement. But there is this constant battle, as I shared earlier in my presentation, of if there is only so much money to go around, should the money be directed towards grassroots sport and building that up and getting more people involved? Or should it be directed towards improving ourselves on the international stage with our elite, high performance individuals? And many would argue, no, that's a very small percentage of the population. So we should spend more money and attention on grassroots community sport and make that the most important. So invert the pyramid and make it an upside down pyramid. So a triangle, as opposed to the base at the bottom and then building up to the top. So it's a philosophical issue. And I think most countries face that, but it's also where the values of a country fall, because when I also mentioned the influencers on sport and physical activity at the front end of my presentation, you know, there's all sorts. There's political ones, there's economic ones, there's technological, et cetera, but there's also the cultural beliefs and the values. And in Canada, we do pay attention to sport, but not to the same extent as some other countries. I would say Australia does a better job than we do. Some of the Scandinavian countries, of course, Canadians are always looking south at the United States and the emphasis that they place on professional sport. I'm not saying that we should be putting more emphasis on professional sport, but I'm just making the point that the country's values and beliefs play a huge role in that. And here in India, this is a fantastic program that the ministry has felt to be worthwhile and to give financial support because they do see the value. And then it takes people like Dr. Usha
to be the champion and to organize these training programs for the coaches and physical educators, and to have the enthusiasm to want to put on a conference next year, or to help build and create partnerships with people around the world. So I think these are all really important things. So those are two good questions, Dr. Rosa, and they're complicated ones, but I'll leave it open for others to make comments. Thank you very much. I Thank you. appreciate your replies. Thank you, Dr. Rosa. Madam Beatrice, for your remarks, please. Oh, Karen, thank you very much for showing the importance of Canada. I feel like moving to Canada. I have never been there. Well, come anytime. Never in Canada. It's amazing. But one day I'll go. And my son, he always, he stayed there for a couple of months, and then he keeps saying, "Oh, I want to move to Canada, Mom." I think it's wonderful to see all the programs that you have there, the sports facilities, the programs, and the points that inclusion, diversity, and equity. Yes, you are doing a great job. And there is one coach, indigenous coach that I met in Brazil. In fact, I showed on my presentation, but you can get the video on the internet. His name is Dano. They call him Dano. I don't know. But he won the second indigenous games, the football for women. And then what he's doing is great. I think, if you have a chance to talk with him and to show what he's doing with that girls, it's something very special. And those girls who are from drugs and were bad self-esteem, and he's doing a great job there, very good. And another thing that called my attention is although you have so good programs, the high of obesity is still a problem in Canada. It's a problem in the world. But then I keep thinking, why people with such a good facilities and program are still obesity? We don't know how to say no to technology, to watch movies, to sit. It's something that we needed to think why, what's happening. And one thing that you mentioned is not you, but I have seen different countries, even in Brazil, the statement, sit less and move more. Okay, but then we live outside, the wheelchair people. See, and they put them outside, and the goal that is leaving no one behind according to the agenda for sustainable development and sustainable development goals of World Organization, who are putting them outside. I haven't, making this point to different people because, yes, although it's related to job, but there are many people, they are in the wheelchair, how they can move, they can stand up, sit less, move more. It's something that is not with, but it's a slogan that they have been using a lot for different places. Sure. Yeah, but well, congratulations. Yes, I hope one day to go to Canada to enjoy all these programs and. Well, I welcome you. Thank you, Beatrice. I think when you talk of sit more, I think pandemic, if you happen to just take a survey of how many hours is a person sitting, even now many would be lying and listening to us rather than sitting, even sitting, because we don't know, we can't see the others. So I think that's a real sickness. So that's something which we need to bring about a change. Madam Darlin, for your remarks, please. I thoroughly enjoy listening to Karen share many of her thoughts, but particularly the kind of organization that comes from national to local, but more importantly to global, because in my humble opinion, the literature that I've read that the Canadian scholars do, and their way in which they approach higher education
is truly inspirational and lines up with many of my values. I many times have thought that I should have gone for a master's or something at Karen's institution or another, because I would have gotten a different perspective than what I got from US universities. My second doctorate was at the University of Pretoria in South Africa, and I was very grateful to experience and be successful in gaining the perspective that the British system, if you will, the old British system had, and India's included, and so obviously is Canada, on the way that you approach particular topics of interest. So I highly suggest that if Karen has offered opportunities for people from India to go to her institution, that you seriously look at that. And, you know, I always believe that where there's a will, there's a way. And of course, we want to do that legally, but I think you would be very well served by seeing the way in which the Canadians approach sport and how it will benefit humanity. That said, I also want to share a couple of other things because I wrote some things down here. Karen talked about values and culture. Dr. Usha, we have talked about values and culture throughout this entire thing, whether we realize it or not. And I believe that one of the biggest challenges we have is to help put values in place that will help to change culture and the way that we look at life to be able to be more inclusive. This will take some time because it's bigger than sport or physical activity. However, if we, through physical activity and sport, do not help push that agenda, things will never change. Things will never change. That said, I do believe that the Canadian government was really smart. And by the way, I love your prime minister. So whether you do or not doesn't matter. But I love your prime minister from afar. Okay, the government was really smart to take the work of the NGO, which in this case was Karen Lofstrom and Company's old version of CAUSE, and include that and work collaboratively in order to gain what they've done all along, plus now add the governmental aspect to it. So that was very, very smart for an NGO to have enough influence on the government to want to make a partnership. So Dr. Usha, I think for you, and again, this is looking from afar, you may have a wonderful door opened opportunity now to combine NGOs, higher education, and the government in order to help to make this change collectively. Also, Karen, you mentioned stuff about harassment. I think that thanks to technology and all these things that we're doing, there have been real movements dealing with harassment and just that whole issue of anything from sexual orientation to acceptance of people just because they're a little different based upon their sexuality, because there's been greater communication globally about that. Hillary Clinton in this country just gave an opportunity to a transgender female to have a podcast that talks about what does it mean to be transgender and how then does that affect sport and all sorts of other things. And so if we can find that venues to speak about things and to bring them to the light, then there is an opportunity to be able to solve those issues, in my opinion.
Karen also mentioned, oh yeah, I want to say something about this. There is, in some countries or regions, a real challenge with culture and volunteerism. I can remember, Rosa, we went to someplace in China, and I had to do something that involved volunteerism. Okay. I looked at the group, and this was like hundreds of young people. They didn't know what I was talking about to volunteer, because in their culture, this did not hit me until I was speaking. This was, woo, a big surprise. But if people don't recognize the aspect of volunteerism and what that does for those you help and those who then will help you, it is really hard. So my thought on that is, through India somewhere, without maybe calling it volunteering, maybe you call it service, because I know your minister likes that term, service. You need to grow that thought in their thinking. And then maybe also somewhere ask the question, what is it about the present culture that discourages not, the no understanding of volunteering? What is it in the culture that prevents that? And then also, how can we build an environment that will cause possibilities for volunteering rather than not? And so maybe, Dr. Ulcha, in your adventures with forming organizations, maybe there is an organization that can take on that notion of building an environment for the possibilities of volunteering. And once people experience how wonderful that is, then it will grow, I believe. So just some thoughts, but Karen and Rosa and Beatrice, we've been talking about this and trying to find solutions to it for many years. And Dr. Usha, I think you and the Indian physical education and community sport people are really positioned to give it a really good shot, as we say. Yes. Yeah, I received the shot. So thank you. Got it. So I got it. you. Thank you. Thank you so much. So thank you for allowing me to Thank build you. on Karen's presentation, because these are the kinds of conversations I think we need to have in many cases. But this is the only forum that I've seen where we have a chance to interact with people who are, there's 420 people on here, and we need to think differently in order to be able to resolve some of these issues. I'm so happy to be involved with this. So many thanks. Namaste. Obrigada, gracias, and merci. Wow, great. Thank you so much, darling. Because Karen, when I think of Canada, it's something, for me, I've just visited one country only for some time. It was in Canada. Yes. People are so good. Hospitality is great. And anybody you see, it's with a smile. And that's a secret of looking, I don't say obese, looking slightly on the chompier side, and a hearty laughter. Wherever you find them sitting, they have a hearty laughter. So I think there's certain things are there which really, it was so nice after hearing that. So that really changes the entire thing. And that, I think that helps in people to have a different outlook. So you have no fear for that. Wherever you sit, here people say, I think this is not proper, this is against our culture. You should be laughing. I mean, there are certain restrictions put forth. But I found very different there. And the center, which are very fortunate, is the Center for Olympic Studies and the Center for Aging, I did visit. So, and we're also looking forward to setting up a center in India and at LNCP. So I'm trying to contact the geriatric department in the medical college. So how is it possible so that we don't have anything in the country as such with physical activity. Physical activity aging in a small pilot project that can be started in India is LNCP. Well, so we're looking forward to that because I thought in a small way, is it possible to give hope
like somebody was saying, give beauty, was saying, give hope and get people moving, especially those above 60 plus. So let them also feel that, yeah, they look good, and we could bring down the economic cost and give life, because that's whatever we live, let's have a quality life is what we could look forward to. Yes, But absolutely. it's been a great learning experience. So that's the best thing. And I think I owe everything to Chella. It's Chella who gave me an opportunity, because Chella had taken a lot of students from India. Chella did a lot, but most of these students did not come back, because the Canadian government actually wanted that after this program, they should be coming back and serving the country. What happens usually when they come out of it, and I think they received a lot of assistance and assistantship, but they don't tend to come in here. But, so I just came for a short visit, and I came in from LNCP, from this particular college. But it's such a wonderful experience. And I felt people are very active. All the professors, I found everybody so active. So it's quite shocking to hear that how is that the progress report card in terms of inactivities on the rise is always a question for me, because I don't know whether it was a question method or something which comes in, because we look at a country like India, even though we say the percentage there, but I don't think in the report card where it's a question method, what you happen to write actually comes in. So is that the fair thing when you come in terms of inactivity or activity? How do you assess the activity is a very big question which comes in. Sure. So sometimes I find the whole family active. I find them all into skates. Like I found the mother, father, children all together. Wherever I've seen them, I used to find the entire family going around out. You not find them sitting this way. So I found that kind of a thing. It's long back, maybe things would have changed. So I know it's been such a wonderful experience, and thank you so much, Karen, for putting India in the forefront, especially with your dance, with Bhangra, and even the images that you put across. But we look forward to starting an association, because Chella wanted us to start an Indian Association of Sport Management. It was very keen, but we need to lay down those constitutional rules. It wasn't working. So Kishore sir was also keen. He asked me to draft it, and I couldn't do that. So we are very keen in starting, and then we would associate, and we could start that here. And then if things come up, I'm sure that you can also think of, if you would like to host something in India, definitely it would be great. Sure. So, but since for the next year, we'll be thinking with XP what's possible. But for the next, after the Doha, you can decide on how it would work. But I think a networking, because India needs it. In terms of sport management, we do have a lot of institutions coming up, but I don't know whether it's the real aspect. What you read in paper cannot be workable. One of the biggest challenges with education is we are taught. When you teach it, like even though I have a diploma or a degree, but to what extent the competency comes in, that's the biggest challenge for us. And that's actually what our students also look forward. That's that which we don't get it. I think when you talk of the Western country, you happen to get, but we don't get that. And I found all the labs, and it was superb. Exercise and pregnancy lab, people working with NASA, the biochemistry lab. I just wish, as Darlene said, maybe at least for the undergraduate, maybe I could have at least got an opportunity to be there. But I was still lucky that I could meet people who were experts. So I still feel lucky that I got an opportunity to see the setup. And the summer games, I was there, where the PE students were coming and taking summer classes. I found the students so active, getting them. So that was a wonderful experience which I've had. So I think it's been really good, but I'd like to, we seek your guidance and your help in helping us to set up, so that at the earliest, if we do that, we can form, but we didn't know how to go about with that constitution laying down and things like that. So I definitely mail it to you, and please do help us so that we could do something. Happy to help. Definitely. So thank you so much. Like she said, much gracious. Because Dhanyavad, and we are learning languages too. Because I keep telling Spanish or maybe Portuguese and other languages. Thank you so much. It's been a great networking, and it's a great family get together. I feel at least once in 3-4 months, if you can just get together, even once these sessions are over, it'll be so nice to stay connected. And and we keep learning a lot, because this is not just a talk, but it's something where you tend to gain a lot. So on behalf of the Ministry of Youth Affairs and Sports, Government of India, Khelo India, a big thank you and namaste to our most dignified speaker, Madam Karen, who's the president of VAS, here with us. And it was such a wonderful experience where you shared. And the president, when she speaks. She's a true leader. So that makes, and I say we feel proud where the stage of this forum is all by. It's very heavy. It's heavy because we have presidents, vice presidents who are here right now. So thank you so much, Madam, because you are the role model for the others. There were many who were looking forward to that. Why not me too? So all the women, especially, and
they all would look forward to see how best we could, because this is something which you're empowering with this position that you are taken. Thank you so much, madam. I'd like to thank Professor Darlin. Thank you so much. I see it as the light. And our Iron Lady, Madam Rosa, thank you so much to make it truly international. A great anthropologist, Madam Beatrice, thank you so much for the valuable inputs that you've given us. I need to thank Claudia, Madam, for her presence. And I also need to thank Dr. G. Kishore, who's a principal and a great supporter, who's actually wanting to do lots. And we're just trying, because when the time is set, every time we may not get this opportunity. That's why we would like to do it right now. And I'd like to thank all Dr. Sanjeev Patil, Mr. Pranesh Harihar, and all my dear PE teachers and coaches. I always say you are the heart and soul of this program. You are the true ambassadors, true leaders, because you are on the field working. Even though we talk here, but practically you take the entire responsibility on your shoulder. So we need to really thank you, because we need to gear up and show the nation that what this program brought about a change. So once again, on behalf of everybody present here, a big thank you, namaste. But before we end, we'll have a feedback, please. Namaste. Thank you very much. Namaste. We'll have a feedback. Namaste. Just a minute, please. For a feedback. Participants, Namaste. please do fill in your feedback, please. Up feedback form, bariye, please. Now improving my Hindi. But your Bangla was great. You made us dance. Yes. Well, I'm going, the next time I'll add lacrosse. We'll play lacrosse. Sure, sure. Now we'll now Google and share it with the participants. So you could see the session was excellent. We'll also try to send the recorded, if you can get that to the speakers, so they'd know what was the feedback, because it was beneficial. And one problem is in terms of language, but they all are very keen in learning. And Karen is a very good athlete. Okay, she's I know very that active. she plays athlete, golfer. How do you play multiple sport? Athlete, I golfer, do, tennis. yeah. I'm going out this afternoon, later in the afternoon, to cross-country ski. So I take advantage because I will snowshoe or cross-country. Our downhill ski areas are closed now because of the lockdown. And that's a shame. In Western Canada, they're open, but in our province, they're closed. And I think they could have left them open with the restrictions of monitoring the number of people who would be there, and then one person on a chairlift. And so they've done those things in Western Canada and other places. I know in the United States, I have a friend who's gone to Sun Valley in Idaho, but they didn't do that in our province. The skating rinks outdoors had been closed, and no tobogganing, but still some of the families did that because they go crazy with young kids at home, and getting outside is important. So next time you need to show us your videos. Yes. Doing activities. Instead of showing a picture, show us a video of you getting active. Same as the case with each one, You with need Rosa, one of with those Darlin. video cams Darlin. that sit on your head, so they can watch where you Oh, go. yes. We That's need to right. see you. Yes. So once again, thank you so much for sparing your valuable time and being with us. And namaste. Namaste. See you Thank tomorrow. you. For the Right. invite. Tomorrow we have Victor's session. So Beatrice kindly put a message to Victor, Dr. Victor. Thank you so Okay. much.